Hi everyone, welcome back to another video and today in this book reading session, okay, so chapter number 2 start करेंगे सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड सेल मेम्ब्रेन। ये टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय DM वासुदेवन सर का है, ठीक है। सो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ओके, सब सेलुलर ऑर्गेनेल and cell membrane. So cells contain various size. Cells contain various organized structure collectively called as cell organelles. ठीक है, सेल जो होता है वो कंटेन करता है वेरियस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज्ड होता है। एंड क्योंकि सेल कंटेन करता है वेरियस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, और जब ये कलेक्टिवली कंटेन करता है ऑर्गेनाइज्ड डिफरेंट ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, देन हम उसको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, व्हेन द सेल मेम्ब्रेन इज डिसरप्टेड, जब सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टेड हो जाता है, आइदर बाई मैकेनिकली मीन्स और बाई लाइजिंग, अगर मैकेनिकली हो सकता है या फिर लाइजिंग, अगर टूट जाएगा द मेम्ब्रेन, लाइजिंग द मेम्ब्रेन बाई 2 in 20। 2 in 20 क्या होता है? ये एक लिपिड सॉल्वेंट होता है। द ऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल्स इनसाइड द सेल आर होमोजेनाइज्ड। दिस इज यूजुअली कैरिड आउट इन 0.25 0.25 molar sucrose at pH 7.4. The organelles could then be separated by applying डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि टेबल 2.1 में दिया गया है। कहाँ पर ये टेबल है? यहाँ पर, ठीक है। Albert Cloudy got Nobel Prize in 1974 by fractionating subcellular organelle. Albert Cloudy got Nobel Prize in 1974 for fractionating subcellular organelles. Now marker enzyme. Some enzymes are present in certain organelles only. Such specific enzyme are called as marker enzyme, जो कि टेबल 2.1 में दिया गया है। Some enzymes are present in certain organelles only. ये केवल और केवल certain organelles में पाया जाता है, इसीलिए ऐसे स्पेसिफिक एंजाइम को हम क्या कहते हैं? मार्कर एंजाइम। After centrifugation, the separated organelle are identified by detection of a marker enzyme in the sample. After centrifugation होने के बाद, सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद द सेपरेटेड ऑर्गेनेल, जो हमने सेपरेटेड किया था जो ऑर्गेनेल्स को, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे? बाय डिटेक्शन ऑफ अ मार्कर एंजाइम इन द सैंपल। न्यूक्लियस, it is the most prominent organelle of the cell. All cell in the body contain nucleus except mature RBC circulation. Except mature RBC in circulation. The uppermost layer of skin also may not possess a readily identifiable nucleus. In some cell, nucleus occupies most of the available space. In some cell, nucleus occupies most of the available space
Example, small lymphocyte and spermatozoa. Nucleus is surrounded by two membranes. The inner one is called perinuclear membrane. Nucleus is surrounded by two membranes. The inner one is called perinuclear membrane with numerous pores. The outer membrane is continuous with the membrane of a endoplasmic reticulum. Nucleus contain the DNA. Nucleus contain the DNA, the chemical basis of genes which govern all the function of the cell. The very long DNA molecule are complexed with protein to form chromatin and are further organized into chromosomes. DNA replication and RNA synthesis मतलब ट्रांसक्रिप्शन are taking place. DNA replication and RNA का जो synthesis होता है मतलब ट्रांसक्रिप्शन are taking place inside the nucleus. In some cell, a portion of the nucleus may be seen as a lighter shaded area. This is called nucleolus. Figure 2.2 में बताया गया है. This is the area for RNA processing and ribosome synthesis. RNA processing and ribosome synthesis. The nucleolus is very prominent in cell actively synthesizing protein. Gabriel Valentine in 1836 described the nucleolus endoplasmic reticulum. It is a network of interconnecting membrane enclosing channels or cisternae that are continuous from outer nuclear envelope to outer plasma membrane. Under electron microscope, the reticular arrangement will have a railway track appearance. George Pallade was awarded Nobel Prize in 1974 who identified the endoplasmic reticulum. Subcellular organelles, nucleus. So nucleus, pellet formed at the centrifugal force. पेलेट फॉर्म. अच्छा ये थोड़ा मुझे पता नहीं इसका क्या मीनिंग है, तो पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं आएगा. इसे एक बार मतलब मैं अच्छे से इसके बारे में रिसर्च करूँगा, ये सारे वर्ड के बारे में, ये क्या क्या टॉपिक इसके अंतर्गत आता है, उसके बाद पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा. ठीक है, फिलहाल के लिए इस टेबल 2.1 को हम ओमिट कर रहे हैं. This will be very prominent in cells activity synthesizing protein, example immunoglobulin secreting plasma cell. The proteins, glycoproteins and lipoprotein are synthesized in the endoplasmic reticulum. Detoxification of various drug is an important function of endoplasmic reticulum. Microsomal cytochrome P450 hydroxylates drug such as benzpyrene, aminopyrine, aniline, morphine, phenobarbital, etc. According to the electron microscopic appearance, the endoplasmic reticulum is generally classified into rough and smooth varieties. The rough appearance is due to ribosome attached to the cytoplasmic side of the membrane where the proteins are being synthesized. When cells are fractionated, the complex endoplasmic reticulum is disrupted in many places. They are automatically reassembled to form microsomes. Now Golgi apparatus.
Camillo Golgi described the structure in 1898, Nobel Prize in 1906. The Golgi organelle is a network of flattened smooth membrane and vesicles. It may be considered as a converging area of endoplasmic reticulum. While moving through endoplasmic reticulum, carbohydrate groups are successively added to the nascent protein. These glycoproteins reach the Golgi area. Golgi apparatus is composed of cis, medial, and trans. सो आज के लिए इतना ही। कल 3 नंबर से हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।